Everyone, I hope you all are doing well. So till now in number systems we have learned about rational numbers. Yes, rational numbers, the numbers that can be written in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0. The numbers that can be written in p by q form. अब कुछ ऐसे numbers भी होंगे जो p by q form में नहीं लिखे जा सकते. उन numbers को हम categorize करते हैं इरेशनल नंबर्स. उन नंबर्स को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स. वो नंबर्स जो रैशनल नंबर्स की तरह नहीं लिखे जा सकते. अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अ नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. वो नंबर्स जिनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. We have studied till rational numbers. Now the next category obviously cannot belong here. It cannot belong here, right? Rational numbers में तो belong नहीं कर सकती है. So we are making our next category here irrational numbers. Irrational numbers जो rational numbers नहीं है, right? अब a combination of rational and irrational numbers make real numbers. कौन से नंबर बनते हैं इनसे? रियल नंबर्स. अब जब भी हम रियल नंबर्स की बात करेंगे दैट मीन्स हम रैशनल और इरेशनल दोनों के बारे में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स. नाउ रियल नंबर्स अगेन मीन rational and irrational numbers, right? Starting with rational numbers for example, 7 upon 8, 4 upon 5, 16 upon 10, then you have 3 upon 11, 2 upon 3, 1 upon 7, and so on, etc. There are a number of those. Okay, now let's talk about the decimal expansion of these numbers. Starting with 7 upon 8. Let's divide 7 upon 8. Since 7 doesn't come in the table of 8, we are putting a decimal here, so we can add zeros. 8 8s are 64, the remainder is 6, then you are gonna add one more 0, you will get 60 here. 8 7s is 56, subtracting it I get 4, I can add another 0 because the remainder is not 0 yet. 8 5s is 40, that means the remainder has come down to 0, I don't need to do anything else. So 7 upon 8 is 0.875. Moving forward we have 4 by 5 which is easy, this is equal to 0.8. Then 16 upon 10 is 1.6, very easy. Moving on, we have 3 upon 11. Decimal expansion for 3 by 11 would be 0.272727 and so on. It goes on. 2 by 3 would be 0.6666 and so on. Then for 1 by 7 would be 0.14285714 and so on. अब हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट टर्मिनेटिंग and the next one is recurring. Terminating क्या होता है? Terminating मतलब when you get your remainder 0, and recurring means repetition. The remainder came out to be 0, so this rational number 7 by 8 is terminating because the remainder came out to be 0. 4 by 5 is equal to 0.8, that only means the remainder came out to be 0, so this rational number is also terminating in nature. तो ये भी terminating है क्योंकि remainder क्या आ रहा है? 0. Again 16 by 10, the remainder came out to be 0. 16 by 10, the remainder came out to be 0, so this rational number is also terminating. Okay, moving forward we have 3 by 11. Now here the remainder did not come out to be 0 and it is moving on with the question 272727. So what do we do in such a case? The remainder is not coming out to be 0, remainder तो 0 नहीं आ रहा है, that means this is not terminating, non-terminating rational number है, right? But हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे और non-terminating तो है because the remainder is not coming out to be 0, but इसकी जो decimal expansion है वो repeat हो रही है because 272727, right? So it is non-terminating and recurring. What does recurring mean? Recurring means repeating because 272727 repeat हो रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे that it is non-terminating and recurring decimal expansion. Okay, again 2 by 3. The remainder is not 0. The remainder is not coming out to be 0. Instead, उसकी decimal expansion repeat हो रही है with 6.
6, 6, 6 and 6, it goes on. So this rational number is also non-terminating and recurring. With 1 by 7 we have 0.14285714, that means it is getting repeated again. So this rational number is also non-terminating and recurring. That means if you write any rational number if you write, either या तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या फिर वो क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. रैशनल नंबर्स की दो ही कैटेगरी आ रही है हमारे पास. कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं दो रैशनल नंबर के लिए? टर्मिनेटिंग. कैसे हो सकते हैं रैशनल नंबर? टर्मिनेटिंग हो सकते हैं कि उनका रिमाइंडर 0 आ जाएगा. अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग. मतलब कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया है, दैट ओनली मीन्स कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होने लग जाएगी, राइट. अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो यू विल सी कि रैशनल नंबर्स इन्हीं दो कैटेगरीज में ही लाई करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट इरैशनल नंबर्स. अब इरैशनल नंबर्स की हमारी डेफिनेशन क्या थी? ऑल दोज नंबर्स जो रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, राइट. तो दैट मीन्स इरैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग हो सकते हैं? नहीं. अगर होंगे तो रैशनल हो जाएंगे. सिमिलरली नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो अगर रीअकर करेगी उनकी डेसिमल एक्सपेंशन तो रैशनल नंबर हो गए. दैट मीन्स इरैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, चलती रहेगी वो. और इट शुड बी नॉन रीअकरिंग, दैट मीन्स उसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट भी नहीं करनी चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स. 0.10, 100, 100, 1 4 times 0 and so on. When I'm putting dots, that only means that the decimal expansion is going on for this number. चली जा रही है इसकी decimal expansion और ये terminate नहीं कर रहा है. If I want to take another example, 4.35, 377, 488, 599, that only means कि आप कितने भी ऐसे irrational numbers बना सकते हो according to your choice, और कितने question डिमांड कर रहा है कि आपको irrational numbers चाहिए. एक और चीज़ जो इसके अंदर वी नीड टू लर्न इज द डेसिमल एक्सपेंशन व्हेन स्टार्ट रिपीटिंग. For example, in 3 by 11 you have 0.272727. Instead of writing it like this 2727, you can write it as 0.27 with a bar. इस बार का यही मतलब है that it is repeating endlessly. Similarly, for 2 by 3 you can write its decimal expansion as 0.6 with a bar because 6 is repeating itself. 1 by 7 के लिए you can write 0.142857 and a bar. Learn a short trick where you can easily guess if the rational number would be terminating or non-terminating recurring. So what are the two possibilities that a rational number has? A rational number, the decimal expansion of a rational number would be either terminating होगी उसकी decimal expansion, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, राइट. यही हो सकती हैं उसकी दो पॉसिबिलिटीज़. नाउ विदाउट डूइंग एक्चुअल डिविजन हम कैसे सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर जज कर सकते हैं इन वन गो कि वो टर्मिनेटिंग होगी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगी. लेट्स सी हाउ. इफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 raised to the power n with 5 raised to the power m, that is if the number in the denominator is either a power of 2, a power of 5, or a power of 2 and 5. For example, if I have 1 by 4, it can be written as 1 upon 2 square, right? So this would be this will have a terminating decimal expansion. Okay, moving forward, if I have 1 upon say 125, 125 is what? Cube of 5. If I write this as 1 upon 5 cube, it can be written as what? 1 upon 2 raised to the power 0 with 5 cube, right? So this decimal expansion for this number would be terminating. अब अगर ऐसा कोई नंबर हो जिसे हम दोनों
2 और 5 की पावर में लिख सकते हैं तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव 1/20, नाउ 20 कैन बी रिटन एज 1/4 into 5, है ना, लिख सकते हैं. एंड 4 is square of 2 and I can write 5 as 5 raised to the power 1, so it is in this form, right? So decimal expansion for this number will also be terminating. Now let's take another example. If I have 1/3, now I cannot express 3 as 2 raised to the power something or 5 raised to the power something. क्या हम लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हो? No, I cannot write this 1/3 in this form. So decimal expansion for this number would be non-terminating and recurring. अगर आप चेक करोगे तो you will see decimal expansion for 1/3 is 0.3333 with dots because it is reoccurring. I hope it is clear to you. इसके हम और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. लाइक इफ़ आई हैव 1/7, इसे भी हम 2 raised to the power n और 5 raised to the power m की फॉर्म में नहीं लिख सकते 7 को. सो दिस विल ऑल्सो बी अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring will also have a non-terminating and recurring decimal expansion. Similarly, for 1/31, 1/27, 1/51, all these numbers will have non-terminating and recurring decimal expansion. मैंने इनमें से किसी को भी सॉल्व नहीं करा है. Only by looking at their denominators I can guess what or how their decimal expansion would be. I hope this is clear to everyone.